Hello, good morning, everyone. Welcome back in SPS online classes after a long time. That means after summer vacation, at least 10 days after 10 days, and we will continue with our subject and our topic. So today I will continue with our next topic in biology. In biology, topic is that improvement in food resources. Without wasting your time, we will start. The topic is that improvement in food resources. That means improvement in food resources. That means we are talking about the production of crops. We are talking about the production of crops. That means production of crops. That means maximum production of crops, maximum production of quality of seeds, maximum quality seeds or quality crops. So basically there are three ways. That means ways to improve crops. That means how can we improve the production of crops, how can we improve the production of qualityful crops. That means कि हम अच्छे फसलों का उत्पादन कैसे कर सकते हैं, अच्छे फसलों का उत्पादन कैसे कर सकते हैं. दैट मीन्स अगर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स अगर बेटर होगा तो ऑटोमेटिकली जो भी मेरा ग्रेन्स होगा, दैट मीन्स कि ऑल द ग्रेन्स दैट कैन बी गेटिंग फ्रॉम द क्रॉप्स दे हैव वेल क्वालिटी, दैट they have well quality. That means कि they have well quality. That means we are talking about the sufficient nutrients, that is we are getting from the seeds, that is we are getting from the seeds or getting from the grains, Basically there are three ways. The first one is that crop variety management. The first one is that crop variety management. Second is that crop production management. And third one is that crop production management. So that is the three basic things. After using, that means after following the basic three things, we will improve the production of food. That means we will improve the production of food resources, we will improve the production of crops, we will improve the production of grains. So first of all we will explain all the basic things about the crop variety improvement. We will explain all the basic things which is related to the crop variety improvement. So first of all we will define the crop variety improvement. Or what is the meaning of crop variety improvement. That means what are the activities can be done in this section. So first of all we will define, maybe question is that define crop variety management. Questions may be arise that define crop variety management or what is crop variety management. So first of all we will define simply it is a technique. That means as a we can say that as an experiment. Technique as an experiment, that means methods, working methods. Technique, the skill that means ability, as a honor of selection of the best varieties of crops. Best varieties of crops. That means all the crops which have all the qualities that is necessary for the various desirable characters and incorporating those characters into the crops of the next generation. That means that is the crop variety improvement. Simply अभी आप लोगों ने सुना होगा कि हाइब्रिड बीज, that means कि something is different हाइब्रिड. एंड आप हिंदी में उसको सुना होगा कि हाइब्रिड है और संकर है. दैट मीन्स क्या होता है कि उसमें क्वालिटी ऑफ हाइब्रिड में क्या होता है बेसिकली कि क्वालिटी ऑफ, दैट मीन्स कि प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है. सबसे ज़्यादा होता है. दैट मीन्स कि क्या होता है उसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है. तो हम लोग सिंपली इसको डिफाइन कर लेंगे कि इट इज़ द टेक्निक और स्किल. दैट मीन्स सिलेक्शन ऑफ सीड, सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट वैरायटी क्रॉप्स, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट वैरायटी क्रॉप्स. दैट मीन्स कौन सा क्रॉप्स. दैट मीन्स सिलेक्शन. दैट मीन्स कि वी आर चूजिंग समथिंग
something from all. We are choosing something from all. That means कि हम लोग बेस्ट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को चूज कर सकते हैं जिसमें क्या होगा, कैरेक्टर्स होगा और वो आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर देगा. तो बेसिकली सिंपल डिफिनेशन ऑफ द क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट. तो सम बेसिक थिंग्स वी विल डिस्कस इन क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट. सपोज दैट हाइब्रिडाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में कलम काटना भी बोल सकते हैं. दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू क्रॉस टू different kinds of species or two different kind of crops. In that section we will discuss some basic points. The first point is that hybridization. तो hybridization is the process. अब बेसिकली देखो क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या एक प्रोसेस है. बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं. मतलब क्या करते हैं कि डिफरेंट स्पेसीज, पहले सिंपल डिफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इट इज द तकनीक as or method. We can say that it is a biological technique or method. It is the technique of crossing between two genetically dissimilar plant to produce a plant new variety. That means कि after crossing two genetically different plants, different plants dissimilar, that means different plants to produce a plant of new variety plant. That means कि after this process the plant have new variety. That means the plant have better production capacity, better production capacity and they have containing the better properties of the parents plants. That means कि सपोज दैट कि जैसे कि हम एक मैंगो ट्रीज का बात करते हैं या फिर गावा ट्रीज का बात करते हैं, क्या होता है कि अभी स्मॉल प्लांट्स में क्या होता है कि फ्रूट्स आ जाता है उसमें या फ्लावर्स आ जाता है. तो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस कराते हैं. दैट मीन्स इसको अपना हिंदी भाषा में कलम काटना बोलते हैं. इन दैट केस क्या होता है कि कुछ जेनेटिक प्रॉपर्टीज जो होता है वो शिफ्ट कर जाता है न्यू प्लांट्स में. जैसे हम लोग बोलते हैं कि जर्सी गाय. तो बायोलॉजिकली क्या होता है कि जर्सी गाय वो क्या होता है कि हाइब्रिड गाय है, जिसको हाइब्रिड बोल सकते हैं बेसिकली. तो उसमें भी क्या होता है कि उसमें एक प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, एक नया जनरेशन को पैदा करते हैं. हम लोग क्या करते हैं कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू एक नया जनरेशन को पैदा करते हैं. और वो जो नया जनरेशन होता है कि दे हैव बेटर क्वालिटी, बेटर characteristics or they have observed all the basic properties from the parents. तो सिमिलरली इसको हम बोल सकते हैं कि जेनेटिकली हाइब्रिड. दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन. तो हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस और तकनीक ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन टू जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स. दो अलग अलग प्लांट्स को हम लोग क्या करते हैं, जेनेटिक क्रॉस कराते हैं और एक नया वैरायटी प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं. कि द वैरायटी प्रोड्यूस, दैट मीन्स कि द वैरायटी produced by this technique, the variety produced by this technique is called hybrid. The variety produced by this technique is called hybrid. That means suppose that a new plant, a plant of new variety, that means new plant. The new plant is known as, in that case कि hybrid, that means new plant कि after crossing this method, that means after crossing these techniques, after using this technique we got a new plant. The new plant is known as hybrid. कि the variety produced by this technique is called hybrid. That means कि new plant is called hybrid. That means new plant is called hybrid plant or hybrid plant or hybrid. That means ये क्या है, हाइब्रिड है. तो बेसिकली ऑब्वियसली क्या होगा कि इट हैज कंटेन ऑल द बेसिक प्रॉपर्टीज. दैट मीन्स बेसिक प्रॉपर्टीज मतलब क्या होगा कि दे प्रोड्यूस क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स and the grains contain all the nutrients that is the important for all those things, all the other things, and they have maybe they have better water absorption quality and all the other things. तो बेसिकली
तो hybridization process can be performed. That means hybridization process can be performed in two ways. There are two ways क्रॉस ब्रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन. दैट मीन्स वो जो क्रॉस ब्रीडिंग है दैट मीन्स वो दो तरीके से परफॉर्म हो सकता है कि फर्स्ट क्या है कि इंटर वेराइटियल क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर वेराइटियल क्रॉस ब्रीडिंग एंड सेकेंड वन इज दैट कि इंटर स्पेसिफिक क्रॉस ब्रीडिंग. There are two ways of hybridization. There are two ways of hybridization. First one is that कि inter varietal cross breeding and interspecific cross breeding. That means इसमें देखो क्या करेंगे. अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि what is inter varietal cross breeding and what is interspecific cross breeding. That means कि इसमें specific that means कि different species, SPECIES, species. That means कि we are crossing, that means we are applying the process hybridization in that case with two different species of crops. कि we are using the process of hybridization, that means we are using the hybridization process for this कि different species. That means कि two different kinds of या फिर two different species of crops. तो different species of crops that means कि हम लोग दो अलग प्रजातियां फसलों का जो नस्ल होता है, दो अलग नस्लों के फसलों को हम लोग क्रॉस कराएंगे. दो अलग नस्ल दैट मीन्स स्पेसीज के क्रॉप्स को क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे. उसके बाद एक न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट प्रोड्यूस करेंगे. इन दैट केस क्या होगा कि एक न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट प्रोड्यूस होगा और इन दैट केस सिमिलर इंटरवेसियल क्रॉस ब्रीडिंग. दैट मीन्स कि सिमिलर स्पेसीज ऑफ प्लांट्स को हम लोग क्या करेंगे कि विल यूज द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस. इन दैट केस सिमिलर स्पेसीज ऑफ प्लांट्स, आफ्टर दैट वी विल गॉट अ न्यू प्लांट. इसमें क्या करेंगे, सिमिलर स्पेसीज और इसमें क्या होगा, डिफरेंट स्पेसीज. तो वी विल राइट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट.